Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the characteristics of viruses as well as a generalized structure of viruses. So let's move to the classboard. So dear students, characteristics of viruses means के viruses की खुसूसियात जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं. This topic is important related to the short questions and as well as MCQs point of view. उसके एतबार से important है. So first of all, the viruses are extremely small. Particles, rather infectious particles. It is better. Infectious particles which can only be seen under electron microscope. इतने स्मॉल हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल. किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो इस तरह की माइक्रोस्कोप से ये विजिबल नहीं होते. दे कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप as they are extremely small infectious agents. Number 2 is their size. So as far as their size is concerned, their size ranges from 20 nanometer to 250 nanometers. Clear? So that is the range. That is the smallest virus, and the largest virus is of 250 nanometers on an average. So the parvovirus have diameter of 20 nanometers, being the smallest virus. Clear? On an average. And the pox virus have diameter of 250 nanometers approximately, being the largest virus. और dear students, याद रखिएगा ये जो largest virus का जो size है, that is the size of approximately the smallest bacteria. Clear? सबसे जो छोटा बैक्टीरिया ये तकरीबन उसके साइज का होता है. And the viruses are ten to 1,000 times smaller than bacteria. Clear? And they can only reproduce
in a living host and also causes disease to the host. So that's why they are called, means the viruses, obligate intracellular parasites. Clear? Obligate means it is compulsory. Intra means within. Intra means within. Cellular means cell. Obligation is compulsion. Compulsory. Clear? And parasites आप पढ़ चुके हैं, the organisms which depend on host for food and shelter, and in return harm them. Clear? So they are called as parasites. तो viruses को obligate intracellular parasite इसलिए कह रहे हैं because they can only reproduce in a living host, in a living cell. एक नॉन लिविंग सेल के अंदर ये जिंदा नहीं रह सकते. Clear? Because the reason is because they lack metabolic machinery and utilize the biosynthetic machinery of host, clear, to make their proteins and DNA or RNA. Clear? And they can reproduce only by replication. ये important MCQ है, याद रखिएगा. They reproduce by replication. रेप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक जैसी कॉपीज बनाई जाती हैं, रेप्लिकास बनाई जाती हैं होस्ट के अंदर. यहाँ पर वो बनाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको डिजीज कॉज करेगा. क्लियर? सो दैट वर फ्यू characteristics of the viruses. Now the structure of virus. Another important topic. So dear students, structure of virus. So the complete mature infectious particle or virus is called virion. क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद रखना. मुकम्मल, मैच्योर और इन्फेक्शियस जो डिजीज कॉज करे,
ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम कहते हैं वायरियन। क्लियर? नाउ एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो इसको स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ। उसमें मैक्सिमम एक जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, जो कि एक वायरस है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो उसी से हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली called as capsid, which is the head. Clear? And these are the capsomeres. And this is the genome of the virus, and the collar and the sheath, and this one is the base plate, and these are the tail fibers. Yeah. And sometimes there is another coat present over there. Another covering is there around. So this is called as envelope. Okay? So अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन मेजर चीजें, थ्री मेन थिंग्स स्ट्रक्चर के अंदर। There are three major things involved. Number one, the protein coat. Number two, its genome. And number three, the envelope. ये तीन मेजर चीजें। So this is the genome. Genome, basically, it is the genetic material present in virus is called, वैसे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल उसको जीनोम कहा जाता है। It's called genome, which may be DNA और RNA। ठीक है, अब इसके ऊपर एक केस है, एक कवरिंग है, एक केसिंग है। ठीक है, ये उनसे आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड। द जीनोम
is encased in a proteinaceous coat called कैप्सिड, जिसके प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जो है ये बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, ये जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स। द कैप्सिड is made up of subunits called capsomeres, and these are the capsomeres are characteristic of a virus। क्लियर? ये किसी भी वायरस के करेक्टरिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी इनकी तादाद जो होती है वो 162 कैप्सोमियर्स are in herpes virus। herpes virus, ठीक है, जो कि herpes simplex एक डिजीज भी कॉज करता है। मुख्तलिफ तरह के होते हैं herpes वायरस, इनकी टाइप्स हैं डिफरेंट। एंड 252 capsomeres are in adenovirus। adenovirus ये basically it causes common cold, ठंड लग जाती है, उसमें नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह शुरू होते हैं इस वायरस की वजह से, एडिनोवायरस। सो एडिनोवायरस के अंदर कितने हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 252 कैप्सोमियर्स इन एडिनोवायरस एंड 162 कैप्सोमियर्स इन हर्पीज वायरस। ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं, ये आपने इसको जहन में रखना है। क्लियर? तो इसका जीनोम भी हो गया, ठीक है, और इसके कैप्सिड और कैप्सोमियर्स भी हो गए, ठीक है, एंड द एनवेलप। तो कुछ वायरसेस में एनवेलप होता है, कुछ में नहीं होता। एन एडिशनल कवरिंग ओवर द प्रोटीन कोट called envelope, ठीक है। So the viruses having envelope are called enveloped viruses, and those which lack, जिनके पास नहीं होता ये capsid, the envelope, are called naked or non-enveloped viruses। क्लियर? तो ये इसके एनवेलप के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर। सो दैट इज अबाउट द कैप्सोमियर्स एंड दैट इज अबाउट द कैप्सिड, द हेड। और अब आते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। ये तो जनरली एक वायरस के अंदर ये वाले सारे पार्ट्स तो मौजूद होंगे। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर ये कुछ एडिशनल पार्ट्स हैं। इसमें ये कॉलर है, ठीक, कॉलर के साथ शीथ है, और यहाँ पर जो टेल फाइबर्स हैं, जो टेल फाइबर्स दे आर 6 इन नंबर। आप देख सकते हैं 3 and 3 6, एंड देयर इज अ बेस प्लेट
यहाँ पर ये बेस प्लेट मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा भी इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनके जो टेल फाइबर्स होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम, इनके अंदर एंजाइम भी होता है। That is called as lysozyme. Clear? Basically, it is an enzyme which is used to digest the wall of bacteria. Clear? And this is the structure of actually a bacteriophage. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।